नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निमिषा त्यागी एंड वेलकम टू माय चैनल, अ स्पेस वेयर वी सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ डांस in all its forms, from classical elegance to expressive modern styles, always filled with grace, rhythm and emotion. आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करने वाले हैं कथक के सबसे बेसिक और इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में, मुद्राज यानी hand gesture. Because before we move ahead in dance, it's important to go back to our basics. क्योंकि हमारी फाउंडेशन जितनी मजबूत होगी हमारा डांस उतना ही ब्यूटीफुल लगेगा. Okay, before we start, let me tell you one thing. If you would like to learn dance with me or want to join my online classes, the WhatsApp number is given below. You can also follow me on Instagram for more dance tutorials, class updates and creative videos. Okay, let's begin about mudras. If dance is a language, then mudras are the words of that language. हम कथक में या हम डांस में अपनी बातों को रखने के लिए मुद्राओं का यूज करते हैं. In ancient texts like Abhinay Darpan and Natya Shastra, hand gestures are described in great detail. Bharat Muni has divided mudras into three categories. First, asanyukta hasta, one hand gesture. Second, sanyukta hasta, two hand gestures. And third, nritya hasta, beautiful hand gestures used in dance. Today we learn three basic mudras, which is also known as asanyukta hasta. Pataka, Tripataka and Ardhapataka. We also learn meanings and uses about these mudras. Okay, first is Pataka hasta. Join all your fingers together, your thumb slightly in, and make sure your palm faces outward. The Pataka hasta is indeed the first single hand gesture described in the Natya Shastra and also known as Natya Rambha. Okay, अब हम इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो आशीर्वाद देने के लिए, नदी या बादल दिखाने के लिए, किसी को रोकने या मना करने के लिए, डर या आश्चर्य का भाव दिखाने के लिए, दरवाजा खोलने या गुलाल लगाने के लिए, देवी देवताओं को दिखाने के लिए. Pataka is one of the most versatile mudra in Kathak. It can expresses calmness, command and devotion depending on your abhinay. Okay, second is Tripataka hasta, three parts of a flag. Now, from the pataka, bend your ring finger slightly. This is Tripataka hasta. अब इसका यूजेस कहाँ कहाँ कर सकते हैं? तो तिलक लगाने के लिए, थंडरबोल्ट दिखाने के लिए, मुकुट दिखाने के लिए या दिया दिखाने के लिए. ये मुद्रा स्टोरी टेलिंग में बहुत यूज होती है. ओके, थर्ड इज अर्धपताका हस्त. फ्रॉम पताका मुद्रा, bend your ring finger and little finger together. This is Ardhapataka hasta, meaning half part of the flag. Ardhapataka can be a knife, sword or weapon. या लता दिखाने के लिए, सींग दिखाने के लिए, संबंध विच्छेद या संधि दिखाने के लिए. So these were the three basic asanyukta hasta mudras: Pataka, Tripataka and Ardhapataka. If you love this tutorial,
then make sure to watch out the next video where we continue building our dance foundation step by step. Till then, keep dancing and keep shining. Namaste. Bye bye.